वेलकम टू बॉलीगर्ल। किसी भी मास फिल्म के सक्सेस के पीछे उसके एक्शन सीन मैटर करते हैं। नाउ वेदर इट इज पठान और RRR, ये दोनों ही फिल्म इंडिया के हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है, विच रियली डिड ग्रेट वर्क फॉर ऑडियंस। नो डाउट किसी एक्शन सीन के लिए इंटरेस्टिंग स्टंट, इम्प्रेसिव विजुअल इफेक्ट, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट की जरूरत होती है, विच इज कॉमन फॉर ऑल एक्शन सीन। बट ऐसे भी कई एक्शन सीन होते हैं जिसे हम कभी भूल नहीं पाते। सो जानने वाली बात यह है कि गुड एक्शन सीन कैसे बनाया जाता है। फॉर मेकिंग एन अमेजिंग एक्शन सीन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ ग्रेट एक्शन सीन, देन इट वुड बी बर्थफुल। RRR एंड पठान, ये दोनों ही मूवी मेरे लिए ऐसी रही है which is really portrays some amazing action scene. So let's know how should be a great action scene behalf of both of them. Before knowing anything, you have to understand setup and payoff, and then cause and effect, which is very important element for writing a great action scene. So let's know first what is setup and payoff. Setup means the foundation of first scene by dialogue and object, and payoff means the conclusion should be come of first scene by other following scene. For example, अगर आप अपने पहले सीन में किसी दीवार पर एक गन दिखाते हैं, so this is setup, and you have to use that gun in following scene. This is payoff. It means आपने अपने फर्स्ट सीन में जो दिखाया है उसका आपने आगे निष्कर्ष भी दिया है। अंडरस्टैंड बाय अनदर एग्जाम्पल, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक ऐसा सीन देखा था जहां कोई भी थॉर का हैमर नहीं उठा पाता, बट एट द एंड कैप्टन अमेरिका इस हैमर को थोड़ा सा हिला देता है। सी दिस सीन, दिस इज सेटअप। Go, Steve. No pressure. Come on, Cap. एंड आफ्टर सम टाइम्स हमने एंड गेम में ये सीन देखा था कि कैप्टन अमेरिका उस हैमर को पूरी तरह से उठा लेता है, एंड थॉर सेड आई न्यू इट। दिस इज कॉल्ड पे ऑफ। I knew it. I hope you all have understand setup and payoff. Let's know one time again. If in the first act you show anything to audience, then in the following act it should be used. You have to remove everything that has no relevance to the story. Don't affect an object, character backstory and setting if that doesn't play any role in the story. Ultimately, you introduce something to audience, so you bring it back later, change in some way. Your setup should be payoff to audience. So how it's work in RRR and Pathan? If you all notice in the RRR, so starting में हमें ये समझ नहीं आया था कि भीम एनिमल को क्यों पकड़ता है और उन्हें खाना क्यों खिलाता है। This is setup. But by this action sequence, हमें ये समझ आ गया कि जानवरों के साथ पैलेस में हमला करता है। This is payoff. And in the Pathan, we saw past of Pathan, जिसमें वो एक गांव को सेव करता है एंड वहाँ का मसीहा बन जाता है। दिस इज सेटअप। एंड व्हाट इज पे ऑफ इन दिस सीन? एट द एंड हमने देखा कि पठान उसी गांव की वजह से जिम को डिस्ट्रैक्ट करता है। दिस इज पे ऑफ। सो आई थिंक इन बोथ ऑफ फिल्म मेड अ अमेजिंग एक्शन सीन विद ऑल ओवर दिस थिंग। आई थिंक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट इज रिमाइंडर which helps audience to remind that what is important object and dialogue. Let's know now what is cause and effect. A good action scene always portray कि इसका कारण क्या है और ये इसलिए हुआ. According to Chekhov's gun method, in your all each beat of action scene, there should be connection from two words, and that is therefore and but. In an action scene, it must be that there is a small hidden story in your each action beat, which should be perpendicular connected from two words, therefore and but. For example, in this scene, there is 8 hidden meaningful story where both words has been used. Like भीम मल्ली को देख लेता है, but a police officer locked by a key to मल्ली. Therefore, भीम fight to police for key. But key लेने के बाद राजू जो कि भीम का दोस्त है वो उसे रोकता है. Therefore, भीम राजू से पिटता भी है.
बट आफ्टर लूजिंग की वो भी राजू से फाइट करता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, योर ऑल फाइट बीट शुड बी कनेक्ट फ्रॉम बट एंड देयरफॉर, जो आपके एक्शन के कॉजेज एंड इफेक्ट को सही से पोर्ट्रे करता है। बट विद दिस थिंग यू मस्ट बी नो इन योर एक्शन सीन इट वर्क्स इक्वली इन टर्म्स ऑफ बीट स्ट्रक्चर एंड विजुअली, जो आपके एक्शन सीन को क्लैरिफिकेशन देता है एंड ऑडियंस उसे अच्छे से समझती है। एंड इन माई ओपिनियन पठान एंड RRR बोथ फिल्म पोर्ट्रे गुड एक्शन सीन, जहां हम इन एलिमेंट्स को यूज होते हुए भी देखते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी एक्शन सीन को देखें, सो नोटिस व्हाट इज सेटअप एंड पे ऑफ एंड देन व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट, जिससे आपको फिल्म और फिल्म के फाइट सीन अच्छे से समझ आएंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलिए दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विद इट्स पॉलीकर, जहां आपको एंटरटेनमेंट एंड सिनेमा से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेंगी। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें बताएं, डिड यू नो दिस टाइप ऑफ डिटेल बिफोर दिस वीडियो? डू लेट अस नो इन द कमेंट। विद इट, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर विच यू वांट। बाय बाय।